मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा पर्व है, उत्सव है, संवैधानिक उत्सव है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, एनसीटीडी के स्तर पर हो। साथ ही साथ हम लोगों पर काफ़ी जिम्मेदारी है नागरिक के नाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक नागरिक बाहर आके अपना वोट दे दें, बहुमूल्य वोट दे दें, क्योंकि ये वोट देने से हम ये भी सोचते हैं कि हम एक हैं, पर एकता में अनेकता है और विविधता में भी एकता है। तो यही तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। तो सबको बाहर आना चाहिए और वोट देना चाहिए। So once again there was a low level of discourse just ahead of the elections, and once again there was personal attacks between political leaders. What do you say? Well, our democracy is very mature, and this is part of the electoral process. I think democracy is extraordinarily mature, and people are uh, cognizant of their responsibilities. They know which way to cast their vote. All this is part of electoral politics, which we must take in our stride in the country. Sir, an opposition repeatedly doubting the EVMs and the functioning of EVMs. Well, this is not a day to discuss this. The Supreme Court has repeatedly upheld the validity of our EVMs. The Supreme Court is the last voice in the constitutional space on adjudication, has affirmed the validity of the EVMs, and I think we must accept it therefore. That's the verdict of the Supreme Court. Message to the